Very good afternoon to all of you. Thank you for joining us for the weekly media briefing. I don't think I have any announcements yet. Why don't we start with one of the hands I saw? Shailendra, why don't you start with you? I'll come back to you. सर शैलेंद्र वांगू नेटवर्क 18 से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आपसे कुछ दिन पहले फिर से एक बार बातचीत का ऑफर दिया है और कहा बातचीत होनी चाहिए दोनों कंट्रीज के बीच में, तो इसको लेकर हमारा रिएक्शन। दूसरा ये कि हमारे एक क्वेश्चन नेक्स्ट राउंड में, अनलेस रिलेटेड है, नेक्स्ट राउंड में ट्राई करते हैं। कांग्रेस के जो एमपी हैं फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने आज ये बात कही है कि पाकिस्तानी आर्मी हमसे बात करने को तैयार है लेकिन हम तैयार नहीं। यशी, This is Yeshi Seli from the New Indian Express. The US State Department has urged that there be calm in Gurugram. So, any comments on that? This is the second time that they've commented on, a violence-related incident in India. You want to comment on their comment? Okay, Siddhant. So, Siddhant from Beyond. So, what's India's official position on the situation in Niger? And also, when it comes to the Indians, What do we say? Official position, is it? I mean, what statement? Yes, statement. Okay. I don't have an unofficial comment on that. Okay. Statement. Okay. And basically, are there any Indians who are impacted by the situation in the country, and if something we are doing? Okay. Related है? जी, जरूर. फ्रेंच एम्बेसडर ने ट्वीट करके इंट्रोड्यूस कर दें वो बेचारे हमारे उमाशंकर एनजीटीज। फ्रेंच एम्बेसडर ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि उन्होंने कुछ विदेशी नागरिकों को निकाला है नाइजर से, और उसमें कुछ भारतीय भी हैं। तो कितनी तादाद है, क्या कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर वहाँ से आई है? ओके, आई टेक वन मोर। और कितने भारतीय वहाँ स्टक हो सकते हैं? सुधी, आई सॉ योर हैंड। So, Shudhiranjan from Bloomberg. Regarding the violence that we are seeing in and around Delhi, is the Ministry of External Affairs concerned because the G20 meeting is a few weeks away? And have you reached out to your other line ministries on this? Okay, let me try a few comments on that. शैलेंद्र, आपका प्रश्न था प्रधानमंत्री पाकिस्तान के उनके जो बयान के बारे में। देखिए, उनके जो इन्होंने एक जो टिप्पणी की थी, हमने उसकी रिपोर्ट देखे हैं। भारत का पोजीशन आपको मालूम है, क्लियर रहता है, कंसिस्टेंट रहा है, वेल नोन भी है कि हम पाकिस्तान के सहित के साथ अपनी सभी नेबर्स, सिर्फ पाकिस्तान क्यों, बाकी सारे नेबर्स के साथ नॉर्मल नेबरली रिलेशंस चाहते हैं और इच्छुक हैं इसके। पर इसके लिए आतंक और टेररिज्म और पीस, हॉस्टिलिटी, ये हटना चाहिए और उससे फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। तो आतंक और शत्रुता मुक्त वातावरण ज़रूरी है और मैं इसको फिर दोहराना चाहूँगा। ये पोजीशन कोई नया नहीं है, हम बहुत बार कह चुके हैं और मैं उसे फिर से दोहराना चाहूँगा। मैंने जैसे कहा, बाकी सारे नेबर्स के साथ नॉर्मल नेबर रिलेशंस चाहते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। इसी को उन्होंने ही आस्क्ड अबाउट कमेंट्स बाय पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। वी हैव सीन रिपोर्ट्स रिगार्डिंग कमेंट्स बाय द पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑन दिस इशू। इफ वी कुड, India's clear and consistent position on this is well known. We desire normal neighborly relations with all our neighbors, including Pakistan. For this, an environment free of terror and hostility is imperative. Yeshi, I think you were referring to State Department comments. I think it was yesterday, their time. Look, let me say what I mean, let me put it in the context. I'm sure you are aware of the measures that are being taken by local authorities. You've seen it a lot in the media, to put a stop to the violence there, to restore peace and normalcy. The comments by the State Department that we saw, that is on August 2nd, which I think also refers to the same. So that's what I would have to say. Sudhi, related to this, you have talked about the similar issue. Look, of course, we would like to see a return to normalcy and peace, but this is an area that our other ministry, I mean, it's not a Ministry of External Affairs issue, and I'm sure our local authorities as well as other agencies are working on this, and you would have seen comments on that. I don't think we have discussed this in any way in this context of G20 or with other countries, you said, or other line ministries. What was the question? No, I don't think they need to be
we need to discuss with them to ensure peace and normalcy, etc. So I'm sure you've seen reports on that and you've seen their statements. And we would hopefully see a very successful G20 summit next month. Siddhant, on Niger, yes, we are closely monitoring the developments there. We are in touch with our embassy there. The embassy has informed us that they are in touch with the close contact actually with the Indian community in Niger. There are about, I would say about 250 odd people, I think, but we could be a little off. The community is well, and we haven't heard any issues or any complaints, and they're all safe. आई थिंक उमा शंकर आप पूछ रहे थे इवैक्यूएशन इसी का कितने हुए हैं. हमारी जानकारी के मुताबिक अभी तो ओपन कर दिया है बॉर्डर्स वगैरह, कुछ सुन रहे थे, पर फ्रांस के कुछ लोग इवैक्यूएट किए जा रहे थे, फ्रांस कर रहे थे, कुछ और देश आई थिंक यूरोपियन यूनियन भी कुछ इवैक्यूएशन कर रहे थे. उसमें कुछ इंडियंस उसी फ्लाइट्स को इस्तेमाल करते हुए निकल गए हैं देश से. 10-15 की बात कर रहे हैं लोग, मुझे एग्जैक्ट नंबर है नहीं क्योंकि वो अपने से ही जा रहे हैं. उन्होंने ऑफ़र किया था कि आप उस फ्लाइट में आ सकते हैं, तो आई थिंक 10-15 लोग निकले हैं. कुछ बिजनेसमैन गए थे जो टेम्पररी बिजनेसमैन थे, वहाँ गए थे, टेम्पररी वीज़ाज़ पे थे, वो भी निकल गए हैं कुछ. पर अभी सिचुएशन नॉर्मल कह रहे हैं, हालात ठीक है. और बाकी फ़्लाइट्स कुछ 5 देशों के लिए अभी कह रहे हैं, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, माली, लिबिया और चाद के साथ बॉर्डर्स और लैंड कनेक्शंस रीओपन हो गई हैं. एंड तो इसीलिए कुछ लोग बुर्किना फासो फ्लाइट से भी जा रहे हैं. तो इसके अलावा भी कुछ अगर जो निकलना चाहते हैं, बट ज़्यादातर लोग वहीं पे अभी रुके हुए हैं. आई कांट हियर यू ऑन द माइक्रोफोन प्लीज. It's on evacuation from. Yes, sorry, I should have asked you. His follow-up query was on how many Indians were there. There were some reports of the French evacuation process. If I could just repeat what I told him in Hindi, was that we are in touch with the Indian nationals. They all seem to be safe. Most of them are staying there, but there were some people who are temporarily there, Indians who have utilized the opportunity of the French evacuation special flights. I think about 10 or 15 have left. I think there are some other countries who have also run some evacuation flights, such as the European Union. I don't have an exact number of that because this was an offer made directly to the citizens, our citizens. We are happy that they managed to come out. I think flights to 5 neighboring countries that I mentioned have resumed, or at least land and air space with Algeria, Burkina Faso, Mali, Libya and Chad have resumed. So some Indian nationals are now planning to leave for those routes. So overall the situation seems to be stable and normal. We are in close contact with the Indian community there. Okay, next round of questions, please. As I said, we are closely monitoring the developments there, and I told you about our embassy is in contact with Indian community. Manish? Saudi Arabia has invited dozens of countries for a conference on peace talks in Ukraine. So has India been invited, and if invited, in fact, who is going to represent India? If you could introduce yourself, Manish. Yeah, this Manas from PTI. Thank you. Okay, please go ahead. I'll come to you. Sir, I'm Siddhant from CNN News 18. So reports have published that Prime Minister Modi is unlikely to attend BRICS summit in person. Do you have any comments to make on that? So you're pushing that line. I'm now to comment on speculative reports. Okay. If you insist on that. Manish, your question was basically on the Saudi. Sorry, I missed it in the confusion of... okay, who had a hand up? Yeah, no, Madhurendra, please. Hi sir, Abhishek Jha from CNN News 18. My question is regarding Russian President Putin's visit for G20 summit happening in Delhi. Do you have any confirmation who is participating? Will he be personally present or somebody would be replacing him? Okay. मधुरेंद्र, बिफोर आई कम टू सर. मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से. सर, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच सिस्मोआ पैक्ट हो रहा है और जिसके तहत पाकिस्तान को और ज़्यादा हथियार अमेरिका दे सकता है. क्या आपको लगता है इससे हथियारों की एक नई होड़ शुरू होगी हमारे उस पड़ोसी पाकिस्तान में, जिसके लिए अभी आपने हॉस्टिलिटी और टेरर जैसे वर्ड का इस्तेमाल किया? इस पर भारत का क्या स्टैंड है? ओके, एंड इलियाना, आई विल कम टू यू. लेट मी स्टार्ट विद इलियाना. जस्ट गिव इट. Good afternoon, Elena, TASS News Agency.
My first question is on enlargement of BRICS. I do understand that previously you said, you commented on this issue, but the closer summit is, the more talks around it. So what is India's position on enlargement of BRICS and why? What do you mean, why it's important to hear from you something as... no, why? You don't know opposition. What do you mean, why? Why? Why what? I mean, why do you why support? It is opposition? Do you support enlargement or not? And why, if this way? Okay, fair enough. Why I ask you? Maybe you saw my colleagues from Bloomberg. They reported today that India may see in this like an enlargement of BRICS, like increase of influence of China. Is it so or not? What do you think on this? And yesterday... No, one question. No, it's also on BRICS. Okay. I mean, on BRICS. Yesterday, Brazilian president supported the joining BRICS of Argentina, Saudi Arabia, and UAE. So, what do you think of joining of these three countries to BRICS? Okay. And I have one more question. No, not right now. Later. Let me take others and we'll come back to you. Look, let me start with your question. I don't recollect whether the Brazilian side specifically mentioned the three countries or not, but since you asked about our position, on the BRICS aspect, I think we have talked about our position a couple of times, as you mentioned yourself. Let me repeat again. We have clarified our position in the past. As mandated by the leaders last year, BRICS members are internally discussing the guiding principles, the standards, criteria and procedures for BRICS expansion process on the basis of full consultation and consensus. As our External Affairs Minister had mentioned, we are approaching this with an open mind and a positive outlook. We have seen some baseless speculation, and you also referred some of it to that India has reservations against expansion. This is simply not true. So let me put it very clearly on that. Manesh, on the other issue of, you mentioned about the Ukraine conference or the South in Jeddah. Yes, India has been invited to attend a meeting hosted by Saudi Arabia on Ukraine in Jeddah. I think it's on the 5th and 6th of this month. India will participate in this event, and our participation is in consonance with our long-standing position that dialogue and diplomacy is the way forward. As regards the level of participation, we will let you know when I'm in a position to do so. Siddhant, your question was also on, also with Siddhant, sorry, you said, on BRICS. Let me repeat again. I mean, I think, as I said, position on that, the consultations are underway, and I think this idea that we are against expansion is simply not true. Participation in the BRICS summit, you asked. So, sorry, that's why I should have noted better. Look, as I said, I would urge you not to go by speculative media reports. When we are in a position to talk about, announce such high-level visits, we will certainly do so, and you know that that's been our practice. For the moment, I would urge you all to, just be patient and let us announce it at the right time. Sorry, please, if you want to ask a question, you have a microphone. I will. Patience. Abhishek, what was your question on the... Yeah. Look, this one I think I answered it at full length last week. We have extended invitations to all the leaders, the invitee countries, and we look forward to their participation. Now, individual confirmations, not confirmations, I don't think it's fair. Perhaps you should ask direct your questions to the country concerned. Maybe they're in a better position to indicate whether they are coming or not. For the moment, we would hope all invitees are able to participate in person in next month's summit. मधुरेंद्र जी, आपका प्रश्न था सिस्मोआ को लेके या मधुरेंद्र जी, आपका प्रश्न था, धीरे जरा, पाकिस्तान के साथ। देखिए, मैं उनके क्या वो दूसरे देश के साथ कर रहे हैं, मैं उसमें टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हमारे सुरक्षा की बात पे हम जो भी डिसीजन लेना चाहेंगे वो ज़रूर हमारे सुरक्षा एजेंसीज़ या आर्मी या बाकी लोग सिक्योरिटी एजेंसीज लेंगे। हमारा जो पोजीशन है पाकिस्तान पे मैंने अभी आपको क्लियर किया, और जो भी हमें कदम उठाने पड़ेंगे हम हमेशा वो कदम लेते हैं सिक्योरिटी के नज़रिए से। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। Okay, next round of question. No, I'll go with you. You had a flood, then I'll come to you. Kadambini Sharma from NDTV India.
आलिया शाह के मामले में कल उनकी मदर जो हैं वो पार्लियामेंट पहुंची थी, कुछ एमपी भी इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल केस की क्या स्थिति है, अगर इसके बारे में आप जानकारी दे सकें। प्रणय उपाध्याय, जी न्यूज़ से। मेरा सवाल इस चीज़ को लेकर है कि हाल ही में पाकिस्तान ने 28 प्रोजेक्ट CPEC और गिलगित बाल्टिस्तान एरिया के और POK एरिया के गल्फ कंट्रीज़ को ऑफ़र किए हैं। तो इस मामले के ऊपर भारत की टिप्पणी क्या है, क्योंकि पहले भी CPEC और जो एलिजिड CPEC है, नहीं, अब फिर से पहला पार्ट सवाल ये है कि पाकिस्तान ने हाल ही में ये ऐलान किया कि वो 28 जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है वो गल्फ कंट्रीज़ को ऑफ़र करेगा CPEC से जुड़े हुए, और ख़ासतौर पर गिलगित बाल्टिस्तान और POK के एरिया के। ओके, इसमें हमारी कमेंट मांग रहे। किसी का हाथ देखा था? आप मनीष। सर मैं मनीष झा हूँ TV9 से। POK में सर लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट हो रहा है। वहाँ के लोगों से जब हम लोगों ने कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि हमारी आवाज़ को पाकिस्तानी आर्मी दबा दे रही है और कोई भी इंटरनेशनल मीडिया या किसी का हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन लगातार महंगाई, करप्शन से लेकर तमाम इशूज़ पर हमारी बात कहीं जा नहीं पा रही। तो क्या हम लोग POK के लोगों को किसी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? नीरज। सर, नीरज हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से। तनमनजीत सिंह ढेसी हैं UK के सांसद। उन्हें अमृतसर एयरपोर्ट पे आज रोका गया, क्या वजह रही? इमिग्रेशन के अधिकारियों ने उन्हें रोका है। ओके। Hi, Gautam Lahiri, freelance journalist. My question relates to the current situation of Bangladesh. It seems that the international community's opinion is almost diverse about the upcoming general election of Bangladesh. And Indian High Commissioner has also met after many months the opposition party BNP. After that, BNP leaders expressed that there should be a caretaker government before the election. So India has not commented so far, I have not seen. So whether you have any comment on this? You answered the question. The whole world has commented. So I am asking whether India has any opinion about it or not. Okay. कादम्बनी, आपने प्रश्न का एक बच्ची जो जर्मनी, उसके बारे में देखिए, हम इस मसले को हाई प्रायोरिटी देते हैं। आपने देखा होगा हमारे काफ़ी कमेंट्स हैं इसमें, हमने एक स्टेटमेंट भी जारी की थी। हमारा मानना है कि कम से कम स्तर पर जो अभी फॉस्टर केयर पे वो बच्ची है, इससे उसके जो कल्चरल राइट्स हैं और उसके जो इंडियन होने के जो राइट्स हैं, इस अधिकारों पे भारतीय होने के रूप में अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस विषय में जर्मन एम्बेसडर को बुलाया गया था इस हफ्ते, और हमारी जो चिंताएं हैं जो इस बारे में, क्योंकि कल्चरल राइट्स और के जो अपने इंडियन होने के जो राइट्स हैं उसको उल्लंघन हो रहा है, इसको हमने स्पष्ट रूप से उनको सूचित किया, और हमने उनसे जर्मनी से बच्चियों को जल्द से जल्द भारत वापस लाने के लिए भी कहा है। और हम इस मामले पर जर्मन अथॉरिटीज़ के साथ बातचीत करते रहेंगे, उनको प्रेस करते रहेंगे कि वो ले आए बच्ची को यहाँ इंडिया में भेजे। प्रणय, योर नहीं, लेट मी टॉक टू नीरज। नीरज, दिस इज, ये जो आपने प्रश्न पूछा इमिग्रेशन के बारे में, या आई जस्ट कम बैक। नीरज, ये जो आपने प्रश्न पूछा ना UK सांसद के बारे में, देखिए ये आपको इमिग्रेशन अथॉरिटी से पूछना पड़ेगा, ये फॉरेन पॉलिसी के दायरे में नहीं आएगा, मेरे पास कोई इसमें कमेंट नहीं है। Somebody want to know in what we said about the case of the child in Germany. Basically, what I mentioned just now was that we accord high priority to this case. We believe that at a minimum, the child's cultural rights and her rights as an Indian are being infringed upon by her being placed under German foster care. The German ambassador to India was summoned earlier this week, and our concerns were clearly conveyed to him. We have also asked for early return of the child to India. We will continue to press the German authorities on this matter. प्रणय, आपका प्रश्न था CPEC के बारे में। देखिए, इस पर हमारा जो रवैया रहा है, हमारा जो रुख है, वो बहुत क्लियर रहा है। हम मानते हैं कि इसमें हमारे अंदरूनी मामलों पे ये हमारे एरिया में जो हम मानते हैं हमारे देश में है, उसके थ्रू ये जाता है, तो इसीलिए हमने इसका हमेशा इसकी ऑब्जेक्शन रखी है। मैंने ये स्टेटमेंट डिटेल में नहीं देखी है, पर अगर कोई भी प्रोजेक्ट हो जिसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर हो,
तो हमारा पोजीशन क्लियर है, हम इसके सपोर्ट नहीं कर सकते। उन्होंने अगर CPEC प्रोजेक्ट्स बाकी किसी कंट्रीज़ को ऑफ़र किए हों जो इस एरिया में ना हो, तो वो कंट्री समझेंगे। हमारे कुछ ओवरऑल कंसर्न्स हैं प्रोजेक्ट के बारे में, वो अलग है, पर हमारे क्षेत्रीय अखंडता के बारे में अगर हो तो उसमें हम बिल्कुल, हमारी कोई पूरी ऑब्जेक्शन है उस पर। मनीष, आपका प्रश्न थोड़ा मैं पता नहीं क्या कह सकता हूँ। POK हम मानते हैं हमारे देश की क्षेत्र में है, वहाँ अगर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मैं इसके बारे में डिटेल में कह नहीं सकूँगा क्योंकि मैंने देखे नहीं रिपोर्ट्स, पर हम चाहेंगे कि पीसफुली ये रिजॉल्व हो उनके जो रिक्वेस्ट है। मैंने सपोर्ट का कोई डिटेल मेरे पास है नहीं अभी आपके पास शेयर करने के लिए। इसका सिंपल सोल्यूशन ये होगा कि हमारे पास वो हमारे इंडिया के टेरिटरी में हो, पर जब तक नहीं है तब तक हम इसमें सपोर्ट हम आपको डिटेल नहीं कह पाएंगे। On the Bangladesh issue, Mr. Gautam, look, I think there are multiple activities there and people perhaps are commenting on it. The whole world may comment on it, but India is India and we have a very special relationship with Bangladesh. What happens in Bangladesh, we are very involved in it. It impacts us, and I think we would allow the election and the democratic processes to be held as per how Bangladesh people determine it. We of course are closely monitored. We have our High Commission there, but I don't have an immediate comment on it. We would hope that there is peace and no violence, and the elections are held as per plans. On the issue of caretaker governments and all, I certainly don't have any comment on it. Okay, I saw a few hands of still left. Shailendra, you asked a question, but anyway, if you have something additional, okay. सर, शैलेंद्र नेटवर्क 18 से। सर, आप जानते होंगे कि 5 अगस्त की एनिवर्सरी फिर आने वाली है और पाकिस्तान ने फिर से एक बार अलग अलग एम्बेसीज जो उनकी, चाहे बेल्जियम की बात करें या मलेशिया, UK, लेबनान, इन तमाम एम्बेसीज में वो 370 से जुड़े हुए इवेंट्स करा रहे हैं ताकि भारत की इमेज को कश्मीर को लेके ख़राब किया जा सके। इसको लेके आप क्या कहेंगे? Okay. Eliana, you had another question? Quickly, yeah? Yes, Elena, TASS News Agency. Politico magazine reported today that it is possible that a meeting on Ukraine at the level of heads of states is possible on the sidelines G20 in India of the summit. Not only on the fringes of September's UN General Assembly or at the G20 summit in sorry, India. I'm not. I wanted to clarify the question. What Yeah. Politico report? I haven't read the report. But what is the question? Is it really so that on the sidelines of G20 summit in India, there is a possibility of some meeting on Ukraine? Hosted by us? In New Delhi, the summit in New Delhi, Okay. of course. Okay. So Fair do you enough. have such discussions, or is it possible? Okay. Fair enough. Something else? I have to close up quickly. Yeah, go ahead. सर, मधुरंग मैं न्यूज़ नेशन से। सर, एक अपडेट सीमा हैदर मामले में जानना चाहूँगा कि इससे पहले आपने बताया था कि पाकिस्तान की तरफ से कॉन्सुलर एक्सेस को लेकर बात हुई थी, इसमें क्या अपडेट है और क्या अंजू को लेकर पाकिस्तान ने कोई कंसर्न रेज किया इंडिया से? अंजू, अच्छा, ओके। और कोई प्रश्न और कुछ है आपके पास? Abhishek, go ahead. Quickly, I have to close this. Sir, Abhishek from CNN News 18. Sir, my question is regarding this Moscow format meeting, which is going to be held in Kazan. So, will India be participating in that meeting? Okay, let me close with these questions. Yeah, why last minute, sir, please. नरेंद्र धमन from Delhi Up to Date. सीमा हैदर वाले केस में ही है सर कि जिस तरह की ये घटनाएं बढ़ रही हैं, तो विदेश मंत्रालय ने कोई पॉलिसी मैटर बनाया है कि विदेश से आने वाले या विदेश जाने वाले भारतीयों के लिए कोई पॉलिसी हो इसी संदर्भ में? मैं आपका प्रश्न बिल्कुल नहीं समझा। ये सीमा के बारे में, सीमा हैदर और अंजू वाला जो केस हुए हैं, इसके वो बिल्कुल अलग अलग है, पर सीमा हैदर वाला केस में आप क्या प्रश्न, आपका प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न ये है सर कि जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, विदेश मंत्रालय इस बारे में कुछ पॉलिसी बना रहा है या नहीं? शैलेंद्र, आपका प्रश्न देखिए, पता नहीं आप कौन से रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, मैंने देखा नहीं है, पर ये हर साल की उनकी कोशिश रहती है कि इस मुद्दे को उठाए या उस तरह के, आप हो सकता है इसी के जिक्र कर रहे हों, पर ऐसे प्रोपागेंडा अटेम्प्ट कभी अभी तक कुछ उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जितना भी प्रोपागेंडा कर ले, रियलिटी ये है कि
जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे इंडिया के इंटीग्रल पार्ट्स हैं और हम इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि ये प्योर प्रोपागेंडा है. Ileana, I couldn't understand the context of it. We certainly have no plans or have nothing to share with you that we are hosting any meeting on Ukraine during the G20. But again, G20 agenda will be finalized and shared with the countries. If there are other countries meeting in Delhi on Ukraine, I cannot comment on that. So I don't know what exactly the political story says, but I don't have really any comment on that or information on that. मधुरेंद्र जी, सीमा जो इलीगल इंडिया आई थी उनके मामले में मैंने कह रखा है क्या पोजीशन है. मेरे पास अभी कोई अपडेट नहीं है. इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं. हो सकता है आप वो एजेंसी से बात कर लें. हो सकता है उनको पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो. और जो लेडी यहाँ से गई थी पाकिस्तान, अंजू, उनके बारे में आई थिंक वो निजी मामला मैंने कहा था. वो फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा नहीं है. वो गई हैं और हमने उसके बारे में कुछ कोई स्पेसिफिक सुना नहीं है कुछ किसी साइड से. फॉरेन पॉलिसी इशू नहीं है. मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा. कॉन्सुलर मुद्दे पर के विषय से कुछ अगर हो तो हम ज़रूर प्रोसीजर जैसा है उसके हिसाब काम करेंगे. Abhishek, in the past we have been attending the Moscow format meetings, but I don't have anything to share. Wait, Abhishek. We don't have any announcement yet for. I saw some report about next month, but I don't have anything to share. But yes, in the past we've attended a few meetings which have been held in that format on Afghanistan. आपका प्रश्न जो था, देखिए, इमिग्रेशन का मामला हमारे विदेश मंत्रालय के दायरे में नहीं है. जो डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज डील करते हैं वो डिसाइड करेंगी कोई स्पेशल कुछ पॉलिसी लाना है या नहीं लाना है. और सीमा के जो केस था और यहाँ जो अंजू के केस बात कर रहे थे, वो अगर गई हैं वीज़ा लेके जो हम सुन रहे हैं, तो उसमें फिर पॉलिसी का मुझे नहीं समझ में आता कि वो निजी मामला है. फॉरेन पॉलिसी इशू नहीं है. मैं उसमें कुछ कह नहीं पाऊँगा. Thank you all for joining us. Good afternoon.